ओके। सो लाइव हो चुके होंगे हम। तो खोलते हैं। हम्म। चलो हेलो। हेलो। तो कहीं। हाँ तो चलो, ब्रॉडकास्टिंग शुरू हो गया है। तो हम, हाँ, तो बेसिकली जो हम इसमें करने वाले हैं, जो असाइनमेंट के लिए, जो कि सब्जेक्ट है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें पहला क्वेश्चन हम करेंगे इस वीडियो में। डिफाइन अकाउंटिंग, एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव्स, स्कोप, एडवांटेजेस, लिमिटेशन एंड बेसिक टर्म्स। ओके। तो क्या फॉर्मेट हम अपनाने वाले हैं? ठीक है, लेट मी शो यू। ओके। सो मैंने क्या किया कि मैंने दो बुक्स को मिस्टर एआई में अपलोड कर रखा है। तो हम उसके हिसाब से, जो एक मैंने एक प्रॉम्प्ट दे रखा है कि ये हमें उस हिसाब से समझाए, ताकि हम एट द एंड ऑफ द सेशन हम 500 शब्द लिख सकें। वी कैन राइट आवर ऑन 500 वर्ड्स। ओके। सो स्टे विद मी। आई विल स्पीक इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, दोनों भाषा में बात करूंगा, ताकि जो नॉन हिंदी स्पीकर्स हैं, they will also listen it. Okay. So whenever we start the accounting, okay. So look at this simple line. Accounting is the systematic process of recording, summarizing, analyzing, interpreting, and communicating financial information. So just whenever you need to understand it, basically those who are not from the commerce background, they are just from engineering background, or maybe who want to revision, just you need to choose the pointers. Okay, pointer आपको चुनने होंगे. So here what I said to the AI, मैंने AI को क्या कहा? Define accounting, explain its objectives, scope, advantages, limitations and basic terminologies. Explain me in details with pointers, Feynman technique explanation method. So outcome will be the explanation. Make me able to write 500 words on my own. जो books हैं, तो books I am following. This is the book. ये book है जिसको मैं follow कर रहा हूँ, और एक ये book है जिसको मैं follow कर रहा हूँ. Okay. So let's start the game. So accounting में जो pointer होंगे, the pointers we will see. Don't read, don't capture all the definition. Just see the pointer. Recording, summarizing, analyzing, interpreting, and communicating financial information. Okay. Here in accounting, we will consider this kind of process for a business or organization. But there is also, we can see example as personal accounting also. Okay. तो जैसे कि इसमें हमारे पास रिकॉर्डिंग है, ठीक है। रिकॉर्डिंग मतलब क्या हुआ? जो भी हम नोट डाउन कर रहे हैं, विच वी आर नोटिंग डाउन इन आवर डायरी और इन एक्सेल शीट, वो क्या हो गया? रिकॉर्डिंग. देन समराइजिंग पार्ट. समराइजिंग का मतलब जो होता है, द व्हाट इट डज इट मीन इन द अकाउंटिंग, वट एवर डाटा वी हैव, जो भी डाटा हमारे पास है, उसको हम पढ़ पा रहे हैं एक स्ट्रक्चर फॉर्म में, ताकि सो दैट दैट स्ट्रक्चर फॉर्म ऑफ डाटा वी कैन गेट सम ऑफ द इंफॉर्मेशन कि हमें उसको कैसे देखना है.
how we want to see that all data. In the next, मैं आपको एक example बताऊंगा. I will tell you the example, so you will understand better. Okay. And after analyzing, when you get the summarizing, when you summarize the whole data, यदि आपने पूरा summarize कर चुके हैं, then you will find uh, what you need. जो आपको चाहिए वो आप ढूंढोगे, वो एनालाइजिंग पार्ट में आता है. देन कम्स इंटरप्रेटिंग. इंटरप्रेटिंग का मतलब होता है व्हाट इट डज इट मीन, उसको कैसे हम समझ रहे हैं, हाउ वी अंडरस्टैंड दैट अकाउंट्स, और वी कैन से हाउ वी अंडरस्टैंड द बैलेंस शीट. देन नेक्स्ट पार्ट, कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. ये सेम उसी से रिलेटेड है. कम्युनिकेटिंग का मतलब है कि हम कैसे शेयर कर पा रहे हैं, हाउ वी शेयरिंग दैट होल बैलेंस शीट डाटा. ओके. और किसके बारे में, अबाउट अ बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन. थिंक ऑफ इट एज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेसेस. सो हाउ लैंग्वेज ऑफ बिजनेसेस, कैसे. इन बिजनेस वी हैव मेजरली स्टेक होल्डर्स. हु हु दे आर, कौन है वो, ओनर्स, इन्वेस्टर्स, मैनेजर्स, टैक्स अथॉरिटीज. ठीक है. whatever the conversation between happen between them, जिन जो भी इनके बीच में बातचीत होगी कंपनी के बारे में, वो उस डाटा के बारे में होगा. और वो डाटा क्या होगा, अकाउंटिंग. हाउ, अकाउंटिंग टू द ओनर is like understanding how much money he have, how much he has invested, and how the status of his business. उसका बिजनेस का क्या स्टेटस है, उसका पैसा कितना है, कितनी देनदारी है, वो उसको पता लगेगा. सो इन्वेस्टर्स को वो क्या बताएगा कि सी, आई हैव दिस बैलेंस शीट, आई हैव दिस प्रॉफिट, आई हैव दिस लॉस, हेयर आई कैन एबल टू आस्क यू दिस मच मनी. तो यानी कि उतने में मनी, उतना पैसा मैं मांग सकता हूं इन्वेस्टर से. ये इंफॉर्मेशन कन्वे करेगा इन्वेस्टर को. ठीक है. वो कन्वे कैसे होगा, उस अकाउंटिंग के फॉर्म में, जो अकाउंटिंग हमने कर रखा है, जो हमने बैलेंस शीट बना रखी है, लेजर बना रखा है, उसको हम प्रेजेंट कर देंगे इन्वेस्टर के सामने. सो वेन एवर इन्वेस्टर रीड करेगा, जब भी वो रीड करेगा, वेन इन्वेस्टर रीड द अकाउंटिंग, ऑल द इंफॉर्मेशन, ऑल द बैलेंस शीट, then he will decide owner is asking this much money, is really he is eligible. ठीक है. उदाहरण में बता रहा हूं हिंदी में. इन्वेस्टर्स जब वो बैलेंस शीट पढ़ेगा तो वो ये सोचेगा, क्या ये ओनर लायक है इस पैसे के, जितना वो बता रहा है. सो फ्रॉम द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ही गॉट फ्रॉम द ओनर about his business, he will decide. Next comes managers. Managers who manages all the what we say operation part. ठीक है. जितना भी ऑपरेशन पार्ट होगा मैनेजर का, जो कंपनी का, वो मैनेजर संभालेगा. ओके. सो अकाउंटिंग में मैनेजर का रोल होगा टू मेंटेन अकाउंट प्रॉपरली. ओके. क्या इनसाइड आ रहा है, कोई आउटसाइड आ रहा है, वो जो मेंटेनिंग होगा वो मैनेजर के हाथ में होगा. ओके. देन कम्स टैक्स अथॉरिटीज. टैक्स अथॉरिटीज क्या देखेगा, व्हाट कम्युनिकेशन टैक्स अथॉरिटीज गेट आफ्टर रीडिंग ऑल द बैलेंस शीट. टैक्स अथॉरिटीज गेट टू नो हाउ मच टैक्स ही डिजर्व, कितना टैक्स इसको लगेगा, हाउ मच टैक्स इट गेट, एंड हाउ मच रिबेट ही विल गेट, हाउ मच रिबेट द कंपनी विल गेट, कंपनी को रिबेट कितना मिल सकता है वो भी देखेंगे. सो how it is, how like accounting is a language of business, because it it is a middle, or we say madhyam, or we say it is a bridge between all the stakeholders. And what are those stakeholders? Owners, investors, managers, tax authorities, to understand the financial health or performance of the entity. तो ये हमारा बेसिक अकाउंटिंग मीनिंग.
तो आगे चलते हैं। सो इसमें एनालॉजी समझिए। अ, जैसे कि वी आर यूजिंग अ डायरी फॉर अ बिजनेस, सो एवरी ट्रांजेक्शन वी हैव, इट इज एंट्री, इट कैन बी सेल, परचेज, एक्सपेंस, इनकम। सो एट द एंड ऑफ द मंथ वी विल समराइज डायरी टू सी हाउ मच मनी वी मेड, कितना पैसा हमने बनाया है, ठीक है, कितना खर्चा किया है। सो होल दिस समरी, ये जो समरी होगी, इट विल make us ready to take decision that what we can do in future, what money or how money we have to use, ठीक है। तो यदि इसमें हम कोर कंपोनेंट की बात करें, तो इसमें हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स है, स्कोप है, एडवांटेजेस है, लिमिटेशंस है और की टर्म्स है। यदि हम अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, क्वेश्चन इसमें अराइज होता है, व्हाट क्वेश्चन इट द व्हाट क्वेश्चन arises here, why do we do accounting, what problems does it solve? Wait a second. हम्म। ओके, सो आप इन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, द फर्स्ट पॉइंट इज रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, जस्ट लाइक आई सेड अर्लियर, जो भी हमने पॉइंट बोले प्रोसेस में, तो हमारे पास था रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, इंटरप्रेटिंग और क्या था, हाँ, कम्युनिकेटिंग। ओके, सो in recording transaction we capturing all the financial transaction, it can be sales, purchase or salary, but here we follow some structure. Okay, follow some structure. Example, if a shop sells a product for 500 rupees, this sale is recorded in the books. Okay, तो समझ आ गया होगा इसमें। जैसे कोई दुकान बेच रहा है 500 रुपए का कोई प्रोडक्ट, उस सेल को हम बुक्स में रिकॉर्ड कर लेंगे। ओके, अब इसको हम किस में डालेंगे, अब ये बात आता है। ये तो चलो रिकॉर्ड कर रहे हैं, वी आर रिकॉर्डिंग इट, बट वेयर वी रिकॉर्ड, वेयर पुट दिस डाटा, देन इट कम्स क्लासिफाइंग ट्रांजेक्शन। क्लासिफाइंग ट्रांजेक्शन में इन दिस वी ग्रुप सिमिलर ट्रांजेक्शन, जैसे हमारे पास रेवेन्यूज होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, एसेट्स होते हैं, लायबिलिटीज होते हैं। अब जैसे कि उस दुकान ने बेचा, दैट शॉप सेल्स सम प्रोडक्ट फॉर 500 रुपीज, वे विच कैटेगरी इट इज, रेवेन्यू, ठीक है। इस तरह से देखोगे एग्जांपल में, ऑल सेल्स गो अंडर रेवेन्यू एंड ऑल एम्प्लॉय सैलरीज गो अंडर सैलरीज एक्सपेंस। सो सैलरी किस में चला गया, एक्सपेंस में चला गया। और एक्सपेंस में क्यों जाएगा, क्योंकि बिकॉज एक्सपेंस इज द एक्सपेंडिचर विच कंपनी नीड टू डू टू रन द बिजनेस। तो एम्प्लॉय को सैलरी देनी है, वो भी एक एक्सपेंस में आ जाएगा। अगला पार्ट आता है, ये तो हमने क्लासिफाई कर लिया, वी हैव क्लासिफाइड द ट्रांजेक्शन, वी रिकॉर्डेड द ट्रांजेक्शन, देन व्हाट टू डू विद इट,
Then comes summarizing data. We prepare the financial statement like balance sheet, profit loss account, cash flow statement. These are different kind of financial statements. Okay. So example we say balance sheet shows what business own and owes a liability at a specific date. And if you say about the profit and loss account, it shows what profit company is making or what loss company is making. And cash flow statement means how much payment regularly he is getting, that company is getting. That is cash flow statement. Okay. So that's how we summarize the data, uh, like preparing the balance sheet, preparing PLA, PL account. Okay. Now next we have record the transaction, classify the transaction, and we summarize also. Then what we will do? Then we will do some analyzing because we have to run the business. हमें ये व्यापार चलाना है, उद्योग में है, हमें बार बार अपने बैलेंस शीट को पढ़ते रहना पड़ता है. In the business, we need to read the balance sheet every time. So here the next part come analyzing and interpreting. Here we compare the financial data over the time. Like last time क्या हुआ था, this time what happened, so that we should know कहाँ पे गलत खर्चा है, कहाँ पे सही खर्चा है. Okay, where is a good expenditure, where is a bad expenditure, or you can say what are the strength, what are the weaknesses. Okay, are we losing any money, where how we get it, हमें कैसे पता चलेगा कि हम पैसा फालतू लूज कर रहे हैं. By reading all data that we already recorded and analyze it. For example, if profits are declining, accounting helps pinpoint whether it's due to rising cost or falling sale. अब देखो जब हम एनालाइज करेंगे, when we analyze this data, then we do some decision. Okay, so rising cost, when we say about rising cost, it's like whenever manufacturing cost become increase, then it is responsible for rising cost. So what decision it company will make, it depend on it. That's, I hope that that's clear to you. If any doubts you have, you can write down in the comment. So next we have a communicated information. The same. Now we made all the financial reports. Okay. We know what we have. We also know the analyzing. After one more thing, when we analyze the whole accounts, we also get to know, do we share this to investor? How much we need to show to the investor or bank or government? Okay. So here, communicate information. We will share the reports to stakeholders. And what are the stakeholders? Rather than, or we say, other than owner, investors, banks, government. Okay. Why investors? We get money from it to expand our business. Banks, we get the loans. Government, we get what we say, a few schemes, taxation, tax relief, all kind of thing. For example, we say a bank checks a company's financial statement before approving a loan. Okay, ये तो समझ में आ गया होगा. बैंक के पास यदि फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा, तब जाके वो देख पाएगा कि मैं इसको लोन दे सकता हूँ कि नहीं. ओके, when bank check all the statements, accounts, then only bank can decide whether I give the loan or not. So next point आया था हमारे पास इसमें, compliances with law और forecasting budgeting. इसमें हम अभी ज्यादा नहीं जाएंगे. We will not go explain this here that much. Just for one definition, we ensure the business. हम ये मानते हैं कि बिजनेस जो कानून है, जो स्टैंडर्ड्स हैं, वो फॉलो करें.
It should follow tax law, company law, or accounting standards. Why we need to compliance with it? Because it make the account well structured. ओके, वो एक स्ट्रक्चर में रहता है ताकि उसे रीड करना आसान होता है। क्यों? हमें कम्युनिकेट भी करना है। ठीक है, अब जैसे हम इसमें एग्जांपल दिया है, फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न्स एक्यूरेटली बेस्ड ऑन अकाउंटिंग रिकॉर्ड। ठीक है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड हमने अच्छे से फॉलो किया होगा, कंपनी लॉ फॉलो करके, टैक्स लॉ फॉलो करके, तब हमें एक्यूरेटली एक्यूरेटली हम इनकम टैक्स भर सकते हैं। ओके, when we done all the accounting recording with the compliance of laws, tax law, company laws, then only we can file the return accurately. Okay, so go to the next point. Forecasting and budgeting. We use past data to predict financial performance. Okay, so that we say last time we don't get any sale. Last time तो sale मिला नहीं है. Then what we will do? Then we prepare a budget कि balance sheet, in balance sheet we are saying we have some money, we have few money, हमारे पास कुछ पैसा है, can we invest in the market or like marketing the product? Then it comes under, we are forecasting the possibility with the past data we have due to accounting record. ठीक है, जो हमारे पास पास डाटा है अकाउंटिंग रिकॉर्ड के कारण, उसके कारण हम फोरकास्ट कर पाएंगे, और उस फोरकास्ट को देखते हुए हम एक बजट बनाएंगे। ओके, फॉर एग्जांपल अ बिजनेस बजट्स 10 लाख रुपीस फॉर मार्केटिंग नेक्स्ट ईयर बेस्ड ऑन लास्ट ईयर स्पेंडिंग। ठीक है, लास्ट ईयर की स्पेंडिंग के हिसाब से कंपनी ने 10 लाख का बजट बनाया मार्केटिंग के लिए, ताकि नेक्स्ट ईयर हम अच्छी सेल कर सकें। तो ये होता है हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स। नाउ कम्स स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। इसमें भी हम ज्यादा नहीं घुसेंगे, सिंपल सिंपल समझेंगे ताकि हम छोटा मोटा हम अच्छे से लिख सकें। व्हाट एरिया डज अकाउंटिंग कवर? स्कोप का जब भी बात आती है अकाउंटिंग में, whenever the scope word came, it explain the areas the accounting can touch. First is financial accounting, management accounting, cost accounting, tax accounting, sorry, auditing, social responsibility accounting. So these are the accountings we have. So financial accounting means preparing the statements for the investor, creditors and liabilities. उसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं है, एक्स्ट्रा चीज नहीं है, देयर इज नो एक्स्ट्रा थिंग टू अंडरस्टैंड दिस इन दिस लाइन while explaining the next. We already have financial statement, but for the external we make specific accounting format. Okay, so that only the few things will be shown to the investors, creditors and regulators. Okay, so for the external, the accounting record will be some separate, that we will say as financial accounting, because it's a external focus, and we say internal focus, that is management accounting. Why? The internally this provides the data to manager so that they can plan. Okay, they can control, they can decision make, they can put some effort in decision. And what planning they need to do? Hire new people, uh, search for the project, how to allot the budget for marketing, controlling the employees, controlling the what decision for the company we need to make. ठीक है, एग्जाम्पल देख सकते हैं, calculating the cost of producing 1 unit of product, set a selling price. So here in management accounting we, what example we are saying, हम 1 यूनिट का जो कॉस्ट निकल रहा है प्रोड्यूस करने का, टू मैन्युफैक्चर 1 प्रोडक्ट, what cost it will be and what selling price we need to set, हमें किस सेलिंग प्राइस में उसको बेचना है। तो ये हम किसके थ्रू सेट करेंगे, किसके थ्रू देखेंगे, वो होगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आगे आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का होता है कि पूरा एसोसिएशन प्रोडक्शन लेवल पे होता है या सर्विस लेवल पे होता है, जैसे रॉ मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, ओवरहेड हो गया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का, कोई यूनिट में मंगा रहे हैं, कोई मशीनरी मंगा रहे हैं,
वो सारा क्या हो गया कॉस्ट अकाउंटिंग में। और इसको कौन देखेगा? डायरेक्टली ऑनर भी हैंडल करेगा। ठीक है, कि वो देखेगा कि हाँ भी मेरे पास कितने एसेट्स हैं, चल रहा है कि नहीं। समटाइम मैनेजर आल्सो हैंडल, बट जब छोटा बिजनेस होता है, व्हेन देयर इज स्मॉल बिजनेस, कॉस्ट अकाउंटिंग मोस्टली ओनर देखते हैं। ओके, सो टैक्स अकाउंटिंग इट जस्ट अ टैक्स रिलेटेड। ओके, सो वी नीड टू इंश्योर to make a tax accounting format, whatever data we have, so that there should be minimum tax liability। ठीक है, तो टैक्स लायबिलिटी जितना कम हो सके उसको देखते हुए हम अकाउंटिंग करते हैं। तो एग्जांपल, कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन फॉर टैक्स पर्पस, क्योंकि डेप्रिसिएशन का भी हिसाब होता है। व्हेन वी स्टडी टैक्स मोर, देन वी गेट टू नो अबाउट दैट व्हाट डेप्रिसिएशन मींस इन टैक्स। अभी फिलहाल हम नॉर्मली देखेंगे कि टैक्स अकाउंटिंग में क्या होता है। टैक्स अकाउंटिंग में फोकस होता है हमारे पास टैक्स रिलेटेड मैटर्स, जिसमें इनकम टैक्स हो सकता है, जिसमें जीएसटी हो सकता है। ओके। हम्म। ओके, सो ऑडिटिंग में आते हैं। ऑडिटिंग इज जस्ट सिंपल टू फाइंड एरर, to verify if it records are accurate or not, that we need to do. So to maintain the accuracy, we do some auditing. Okay, so that is the also the area of accounting. Accounting helps uh, us to know that what error we have in the data. Just example, when we have not proper accounting, okay, and maybe any employee or any person in your or any human resource, कोई भी human resource कोई भी ध्यान नहीं कर सकता है। इसलिए we make sure auditing should be best. Okay, so an auditor checks if a company's financial statement are free from errors or a fraud. Fraud ना हो सके, so that fraud should not happen, we do auditing. And last here, social responsibility accounting. It measures company's impact on society and environment. ओके, सोसाइटी में जो इन्वायरमेंट होता है, इन सोसाइटी के लिए, एनवायरनमेंट के लिए जो हम काम करते हैं, जैसे सीएसआर हो गया, कार्बन एमिशन के ऊपर काम करना, इसके लिए हम अलग से रिपोर्ट बनाते हैं, अकाउंटिंग बनाते हैं। लाइक इन फ्यू कंट्रीज देयर इज सम टैक्स रिबेट ऑन रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन, जस्ट लाइक इट we also maintain a separate account for social responsibility accounting. For example, Procter and Gamble, classmate, or classmate parent company ITC, they used to um, spend 3% or 5% of their profit for the social cause. That is called under come under the CSR, or we say social responsibility accounting. Okay, so these we have discussed till now: scope of accounting and objective of accounting। ठीक है, तो अगला हम बात करेंगे एडवांटेज और टर्म्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए अभी के लिए इतना ही। मे बी मैं लेटर ऑन दोबारा लाइव आके मैं इस पर बात करूंगा। आई विल टॉक ऑन इट बिकॉज आई नीड टू गो टू वर्क। ओके, सो अभी के लिए इतना ही। ओके, कोशिश करना, कमेंट करना यदि आपको कोई डाउट है। इफ यू हैव एनी डाउट, कमेंट इट। ओके, और स्टे ट्यून, सब्सक्राइब कर लीजिए। आई विल डू दिस काइंड ऑफ वीडियोस लॉट। अभी in this current condition, maybe I'm doing some reading and live teaching. In future also, this account I will cover finance, very different aspects of finances. Okay, so stay tuned. The part two will come soon. This is part one. I will try as soon as possible.